always remember कि कोई भी एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा और आपको वो कहाँ लेके जा रहा है. तो take this CUET very seriously because this will decide where the coming 4 years you will be spending, right? So make sure that you spend it in a good college. Hello and welcome. This is a podcast series by ExamFactor. मेरा नाम है रोहन. आपके पास हम ये पॉडकास्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम CUET के टॉपर्स के साथ बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रिपरेशन क्या था और उनकी एक्सपेक्टेशन कॉलेज को लेके एज अ फुलफिल्ड और बहुत सारी चीज़ें उसके अराउंड वी आर टॉकिंग. टुडे वी हैव Yashshvika Tiwari. She is a CUET topper. Welcome Yashshvika. Or she is currently, like, you can introduce yourself. Okay, so I'm Yashshvika Tiwari and we were from the first batch which gave the CUET in 2022 and I scored 800 out of 800. So I'm 100% holder in the CUET inside. And currently I'm pursuing political science honors from Ramjas College. जी, तो 100% टाइप सुन के जो आपके रिएक्शन था, मेरा भी वही रिएक्शन था. So Yashshvika, welcome. So I was thinking what I would ask क्या पूछूंगा कि मतलब how this conversation should go and मुझे समझ में आया let's keep it conversation because I think कि जब हम toppers के interviews वगैरह देखते हैं so a lot of time it happens कि you get a lot of goody stuff कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है and for people who are actually preparing sometimes it get थोड़ा सा demotivating maybe it's very difficult and the person is finding it very easy because they are finding it difficult. Not everybody finds it easy like you. तो थोड़ा सा हम उस सेंस में जाएंगे, थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के अंदर और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इज इट कॉलेज लाइक. So first of all, I have few questions for you. What is the meaning of your name? So my name means on the top of the world or the one who is very famous. Okay, on that way of becoming famous, right? You have achieved something and you will achieve much more than this. And so you said you are studying political science. So what is the inspiration for doing political science? I am asking this question because जो एक mindset है India के अंदर like कि if you are a good student, go for science, right? But what changes? Like why did you select political science? It has a very simple answer. क्योंकि I like political science. Yeah. So of course जैसे आपने कहा same मेरे साथ भी हुआ था. In the 10th class also I scored 96.4% something. तो मेरी टीचर्स ने सबने एडवाइस किया that you should take maths or the science stream because you are a topper. But I was like just for the sake of marks I cannot choose science stream or maths stream. It is not my domain of interest. So that is why I chose humanities and after that humanities के बाद ये समझ आया कि मुझे इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि आप खुद को पहले समझ लें. तो आई थिंक कि जब वो सेल्फ एनालिसिस आप में आ जाता है उसके बाद यू कैन मेक गुड चॉइसेस. सो आई थिंक कि मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए बनी थी तो इस वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस यूज़ किया. Like, who do you look up to for like in the political scenario? Who do you look up to? I want to become something like this. Okay, there are so many personalities. I cannot choose one. It's difficult. Okay, fair enough. Okay, so is there any memory जहाँ पे लगा कि यार political science that I'm here for? Like this is the first point. Like I have few of mine. कि हाँ मेरे को रीजनिंग करनी है जब मेरे को पापा ने गाली डाली. So what's yours? Like that I hope कि today मैं ज़्यादा पुराना नहीं but आज लोग वो करना चाहते हैं तो करने की तरफ like they put efforts there and there's a lot of information available on the internet. So nothing is like sort of कि unachievable है. तो you know कि हाँ यहाँ तक पहुँचा सकता है so you try for that. So what was like, can you recall something like this was the moment I thought yeah I should go for this, or like even if you want, sorry to interrupt, but like as we were talking and after this you want to pursue I guess CPSC, right? You're trying to go for civil services. So
तो वो भी कहीं ना कहीं से वो पॉइंट आएगा, मे बी दैट इज द मेन रीजन एंड हियर इट इज लाइक द वे टू गो देयर. तो वो कहीं से आया, इट्स अ मेमोरी. Yeah, there is exact memory which I remember. So it was 2015. I remember in which class I was. तो मैं काफ़ी न्यूज़पेपर वाला पर्सन हूँ. अच्छा. तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा से अच्छा लगता है. तो हाँ, बचपन में समझ नहीं आता था कि न्यूज़पेपर का लाइक यूज़ क्या है. जस्ट हेडिंग्स एंड पिक्चर्स देख के मैं खुश हो जाती थी. तो 2015 में टीना डावी वॉज ऑन द फ्रंट पेज. हाँ जी. एंड शी वॉज फ्रॉम LSR. हाँ. तो मैं बहुत फैसिनेटेड हो गई उनको देखकर कि ओके, समवन इज ऑन द फ्रंट पेज, यू नो, फैमिली सेंटिमेंट्स थोड़े से. तो उसके बाद मैंने उनके बारे में पूरा पढ़ा और उसके बाद इट्स लाइक कि मैं उन्हें फिर फॉलो करने लगी धीरे धीरे. उनका कॉलेज, उनका कोर्स, उनका तरीका. सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट when it hit to me that okay, this is something which I want to do. Do you also know कि Aditi Rao Mehta is from LSR? Yeah, she also works. Yeah. There's from LSR. Right, these are linked very good personalities. I also of LSR. One? Neha Vasin. Neha Vasin, हाँ. और Nidhi Rajdan is from LSR. So, have you made any of these? Do they come to the college? We want to know. No. Do you come to college? You know, I didn't search for that. हाँ, ठीक है. I was checked, but हाँ, शाहरुख खान came to Hansraj College, है ना? Yeah. है ना? तो ये तो Gauri from LSR. Gauri Khan is from Yeah. LSR, right? Yeah. So somehow you are connected to Shahrukh Khan. Okay, nice. So it was good to know that you had this aspiration and you are going very close to it right now. I would say the path you saw and you are on that right now, and I hope it will be as fruitful as you want. Okay, so ये तो है. Do you listen to podcasts? Not really. I am books. I'm more inclined towards books. Okay, can you give us like 2 book suggestions? For me personally also, I also read a lot of books. What kind of them? I love to read fiction. Ish. ये मुझे पता था, non-fiction पूछा मेरा समझ सब है. I also read non-fiction, but I enjoy fiction. Okay. Fiction में नहीं पढ़ती. ठीक है, non-fiction के 2 books आप recommend कर. ठीक है. It can be Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. ठीक है. And the second would be, okay, it's very common. The Power of Your Subconscious Mind. It's really great book. अच्छा, ठीक है. So how is the power of your subconscious mind right now? Okay, very bad word. Anyways. Okay, so I will talk to you about CUET now. करते हैं वो, but man, that's very obvious. Our audience is going to that only. I also want to find out here, like everybody has some personality and that has a big role. जो भी वो कर रहे होते हैं उस तरफ, ठीक है. तो first let's just explore that. Right, that's my approach right now. So I would like to know, how did you manage the stress in your exam? जब exam का time हो रहा है तो there is a lot of stress. There is one thing, like, do you know about this term? It's called RPM. I don't know what's it called that. Actually, it's called rotation permanent, but right now it's Rishtedar pressure management. So how did you do that? Rishtedar. Because so yesterday I was listening to someone and they were talking that result आने वाले हैं आपके बच्चे का, and they said कि हाँ बता. Like, these 2 people are not very connected, but they want to know each other's बच्चे के result. And the parents said कि हाँ कुछ अच्छा आएगा तो बताएंगे. So that came to my mind. Yeah, like this indirect pressure from everywhere, builds a lot of tension वो student के दिमाग में. और अब जैसे उसको पता चलता है that parents are hoping so much. They have so much on stake, and you are actually bearing all of that baggage. So how do you find that? How do you cater that stress? Was it difficult for you? Yes, it's difficult for everybody, I would say. Expectations बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, and I think expectations आज के time पे for our generation it is not distilled into matter in, like it's our parents जिनकी expectations का बहुत ज़्यादा होती लगता है. तो
उसके लिए कुछ कोप अप करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट सेइंग कि ओके हमसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे हमें उसमें भी प्रॉब्लम होगा कि हमसे एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं है. गुड पॉइंट. या सो एक्सपेक्टेशंस को हम नहीं किसी की खत्म कर सकते. दैट इज अप टू यू. हाउ डू यू टेक दोज एक्सपेक्टेशंस? यू टेक इट एज अ मोटिवेशन और यू टेक इट एज अ पैकेज. सो दैट इज द पॉइंट. एंड आई हाँ, और अगर मुझे कभी लगता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि ओके इतना मत सोचो, बी रियल, बी प्रैक्टिकल. इतना नहीं कर सकती मैं. Might not have realized, but this is actually some very good thought की जो आपने अभी कहा कि when you find कि वो expectation कुछ ज़्यादा ही unreal या फिर मेरे ऊपर pressure बना रही है, talk to your parents. Most of us keep on taking that for the validation of our parents और इस वक्त तक ये जाते हैं where we cannot go back now. ऐसा उस वजह से काफ़ी इशू होता है. But anyways, so you handled that. So after, before and after getting these marks, what was the change around? Like मेरे को तो पता है कि सिर्फ आपके पेरेंट्स वगैरह लेके जाते हो कि अरे मतलब, या फिर किसी और के पेरेंट्स, उनसे बात करो दीदी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं. So like what happened? Like before how was it, and after that how was it? Okay, so it is like before बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जिन्होंने आज तक कभी बात ही नहीं की मुझसे. वो इवन मुझे जानते भी नहीं है, मैं उन्हें ही नहीं जानती. पता नहीं कब लास्ट मिली थी मैं. बट जब उसके बाद रिजल्ट आया एंड दे ऑल वर सो एक्साइटेड. आई डोंट नो इट वाज इट एक्साइटमेंट और व्हाट. देन उसके बाद उन्होंने ये सोचा है कि उनके सबके बच्चों के काउंसलिंग मैं ही करने वाली हूँ. तो आई हैव माई कजिन्स नंबर इन माई फोन कि सबके मैसेज आते रहते हैं कि आपने कैसे किया था, कैसे किया था. पर्सनल गाइडेंस है. तो इवन देयर पेरेंट्स कॉल माई पेरेंट्स स्पेशली फॉर माई कॉन्टेक्ट कि हमारे बच्चे को आपसे बात करनी हो, एटलीस्ट हम तक दे दीजिए. तो ये चीज़ का चेंज है. बाकी मुझे लगता है कि हाँ, चेंज इज more personal also. It is not always about कि आपसे सोसाइटी का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ. मुझे लगता है कि मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हुआ उसके बाद. The kind of confidence that you get after getting good marks, the kind of a feeling of proud, a feeling of achievement is really different. It's like कि जब आप एक बार 100 स्कोर कर देते हैं किसी भी एग्जाम में या इवन किसी टेस्ट में, उसके बाद अगर आप 99 भी स्कोर करेंगे ना तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं मिलेगी. तो यू ऑलरेडी टेस्टेड दैट 100% वाला खुशी. सो दैट इज द पॉइंट. एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए इतने एफर्ट्स तो देना कि वो इस खुशी को एक बार जी सके. उससे मोटिवेशन बहुत हो जाता है फिर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. नाइस. So we have talked about a lot of different things अभी तक. अपनी मुद्दे की बात कर रहे हैं. तो point is कि obviously really clear CTs are very new now, right? So you might have हमारे कुछ apprehensions होंगे उस exam को लेकर कि how is this going to be, or how much did I prepare for this? ये सारी चीज़ें होंगी जो अभी आज के बच्चों के भी दिमाग में हैं, but was उनको explore करने के लिए बहुत कुछ है अपनी बाइक इसकी. What was your approach towards CUET while you were preparing for it? And there, so it was mid-12th when we got to know कि अब 12th के मार्क्स मेडल नहीं मिलते हैं और हमें एक और एंट्रेंस टेस्ट देना होगा. तो सबसे पहले तो रिएक्शन यही था कि ये क्यों हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हम हमें बोल चुके हैं, हमें ऑफिशियली टैग मिल चुके हैं, वी आर दैट एक्सपेरिमेंटिंग बैच. तो सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होते हैं. तो दैट इज़ वाई द फर्स्ट रिएक्शन वाज कि अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ी, डबल मेहनत होने वाली है. तो वो चीज़ थोड़ी बुरी लगी थी, थोड़ी क्या बहुत ही बुरी लगी थी, क्योंकि एक तो आप अब मिड-12th में आके ये नहीं कर सकते कि अब 12th को साइड लाइन कर देते हैं, सिर्फ CUET कर देते हैं. इट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट? तो इस वजह से मुझे लगा कि दिस इज़ वन ऑफ वेरी डिवास्टेटिंग फॉर मी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, एग्ज़ाम लोड बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा. उसके अलावा उसका जो सिलेबस है, स्ट्रक्चर है, उसे समझने में टाइम जाएगा. अभी तो बोर्ड ही समझ में नहीं आ रहे थे, तो नाउ यू हैव एडिशनल प्रेशर. एक्सपेरिमेंटल बैच वाली जो बात है, तो हमारे साथ कैसे कुछ हो रहा था यार. हमें यही लगता था कि वी आर द एक्सपेरिमेंटल वाला बैच, द गिनी पिग्स. तो क्योंकि हमारे साथ कोई हमारे में ये हो गया था ना, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है.
Now you have like some weightage given to boards दे दिया गया था with your like competitive exams, and उस time the बात तो very much भी नहीं until we attempted the exams to yeah. I think this so with CUET I guess the point is कि all these colleges which were accepting students from different college or different schools, different reasons, और फिर ऐसा होता था कि these all states have some different criteria of marks वगैरह, and for some states, student of some state, it was really difficult to get into a good college because the cutoffs were so high और उनके तो शायद टॉपर को भी उतने परसेंटेज नहीं मिलते, तो पूरा एक सपना जो था किसी स्टेट में किसी बच्चे का वो बिल्कुल ही हो जाता था. So I guess that is the point. You might know it already. That is the point of doing it. Anyways, so आपने जो कहा कि you thought कि you have to restart everything. Did that happen, or like was it like you were already prepared for your boards? तो कितना boards और CUET के syllabus में कितना difference रहा है? I think syllabus में कोई ज़्यादा difference नहीं है except for the deleted chapters में boards के 9 कुछ deleted chapters थे NCERT से. उसके अलावा कोई सिलेबस में खास चेंज नहीं था, तो दैट वाज अ रिलीफ. तो इसी वजह से मैंने बोर्ड से पहले CUET वाला सोचा भी नहीं था इस बार. जब बोर्ड एक बार ख़त्म हो गए उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दोज स्पेसिफिक रिलेटेड चैप्टर्स बस. तो उसके बाद फिर मैंने स्ट्रैटेजाइज किया. So what we did in ExamFactor, what we did, so we were preparing these questions, or we are actually working completely with the CUET syllabus, and we were shocked to see that if you just cover your board syllabus, you might be covering 75 to 80% of CUET syllabus, 20% is still left. तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है. Across all subjects वो कुछ ना कुछ chapters हैं. And we also conducted some tests और हमने देखा कि जो बच्चे मतलब स्कूल में we did our like mocks and all, gave students our mocks, और हमने देखा कि जो चैप्टर था नहीं ना जिसमें जो CBSE में नहीं है बस CUET में है, it was completely black cover. मतलब 5 के 5 क्वेश्चन they left. They had no idea about the chapter. I think that is very important coverage of complete syllabus, कि एक बार तो सब कवर कर लेते हैं उसके बाद बनता है नहीं बनता, that depends on the difficulty level of the question. Anyways, so obviously nice. अभी जो टाइम है right now, we are going to have the exams in like 2 months, I guess, May making exam. Or what were you doing at this time? Imagine yourself 1 year ago. Okay. What were you doing this time? We had our exams in June. अच्छा हाँ तुम्हारे तो. Yeah. As I said, we were the experimental and so nothing like it's totally for us. So we had our exams till my last exam was on 11th or 12th of June. Then I took a 2-day off. अच्छा. I didn't do anything. मैं बहुत आराम से casually रही 2 दिन क्योंकि मुझे पता था उसके बाद अभी दोबारा से शुरू करना है. तो इस वक्त तो मैं अगर अप्रैल में वाला टाइम को उधर प्रोपोर्शनेट कर दूँ तो इस टाइम तो मैं बोर्ड्स भी प्रिपेयर कर रही थी. Nice. तो सब्जेक्ट्स का तो ये रहा. What colleges did you like? LSR was your first choice, or like did you? Yeah, LSR was my first choice. Second was Hindu. I don't remember. But why LSR on top and Hindu on second? Because it was a childhood fascination. Okay, I want to go in LSR. And then I did some research also. I talked to some of my seniors who were there with DU. So I did a comparison between both these colleges. So and what did the pros and cons of these colleges? I should not compete with that. It will demotivate most of it because I'm in LSR, so I say that there are so many pros of it. So that will be biased. Your opinions about LSR would be biased only. Hey, it's nice that you were pretty dedicated in this. मतलब आपका जो destination था गया fixed. Can you tell us more colleges ऐसे मतलब इसके around for like good Paul Science College? You might have explored something else also जो आपकी second, third या fourth priority में होता. Except DU also जो CUET से coverable थे. You know some colleges like that. जो आपके कहीं ना कहीं था mind में कि ये नहीं होता because backup कोई लोग होता है हमारे दिमाग. Yes, I think applied for Tata Institute of. वो CUET के साथ होता है क्या? हाँ, I think yes, क्योंकि मैंने apply किया था उसमें. Nice. So I knew कि नहीं जा रहा, but फिर भी एक backup clear. बिल्कुल backup होना ही चाहिए.
Okay, so it's nice. I guess आप कह रहे हो कि it's good and you thought about that. So our students, those who are watching, keep some backup options, do some research, and we are also providing a lot of counseling around that. In college, you can watch our YouTube sessions. We run webinars जहाँ पे we are guiding students, जहाँ पे course selection को लेकर और subject selection को लेकर. We are having our webinars. The student can come live after you can ask your questions. So, I think that is a very good thing. Because हमारे टाइम पे कुछ ऐसा काउंसलिंग और मेंटरशिप था नहीं, तो इट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक कि पहली बात तो आपके पास अपने कनेक्शंस होने चाहिए सीनियर्स के साथ, जो कि मेरे पास नहीं थे इतने, तो इट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी. और उसके अलावा द मेन थिंग इज कि आप कॉलेज की ब्रांड पर जाके चूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कॉलेज का एक पर्टिकुलर स्ट्रीम होता है जिसमें वो बहुत अच्छा है. तो LSR का पॉल साइंस फैकल्टी बहुत अच्छा था, वो मुझे समझ आया था वो धीरे धीरे. और हिंदू का कोई और स्ट्रीम. how did you know about the faculty वाला portion? How did you what was your source? I should not disclose that. No, why not? Like, okay, I get it. Whether you watched through some relatives, you know about those professors or that. Seniors. So seniors. हाँ, there was no expert guidance that I got. So I think कि अगर वो तो हो सकता है थोड़ी choice और change हो सकती है. Guidance is important. I guess you're facing that challenge जहाँ पे हमारे पास guidance नहीं है चीज़ों को लेकर, exams को लेकर. I hope we are trying कि हम थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाएं. We need to do much more. We need to cover a lot of students. But right now, what we are doing, you can take help from that. Okay. Anything else which you want to talk about? For example, my question would be कि मेरे को लगता है बच्चे जब इस फेज में होते हैं, that's why I asked you that question कि आप इस टाइम पर क्या कर रहे थे. ये वाला जो टाइम है रिविजन के लिए, people because they have done their boards and they're not like मुझे शुरू से पढ़ना है, they're not like that, but they want to revise again. But the revision part, because you don't have notes maybe, and बहुत अच्छे से notes नहीं बनाए. Second, I'm not talking about you. One might not have notes. ठीक है, उसके पास फिर जो सब्जेक्ट भी नॉलेज है बहुत अच्छे से नहीं बढ़ाई की, let's say problem on the students. ठीक है, but अब क्योंकि रिवाइज करना है, you might have gone through this time, और तो आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी? Okay, so my revision strategy was a bit different. मुझे लगता है कि इस टाइम जो most of the juniors मिस्टेक कमिट करते हैं वो ये है कि वो पूरा चैप्टर दोबारा से लेकर बैठ जाते हैं और वो पूरी बुक दोबारा करते हैं. तो आई थिंक वो नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड सेकेंडली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी और वो टाइम कहीं और यूटिलाइज हो सकता है. तो इस वजह से जो मैं करती थी वो ये था कि आई यूज्ड टू सॉल्व मॉक्स और द सैम्पल पेपर्स फर्स्ट विदाउट एनी रिविजन, एंड उससे उसका एनालिसिस करती थी फिर मैं, ताकि ये पता चले कि कौन सा एरिया वो है जो मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया जो वीक है. उस एनालिसिस के बाद आई यूज्ड टू गो थ्रू दोज टॉपिक्स ओनली जिनकी क्वेश्चंस में मैं अटकी हूँ, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए. तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, बल्कि वो सब टॉपिक्स या वो स्पेसिफिक सब टॉपिक्स पे जाऊंगी जो कि मुझे नहीं आते. और कैसे पढ़ी हुई आपने एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी से पहला डिवीजन. आई थिंक डिवीजन क्या, ये पहले जब समझ रहे होते हैं हम जिस जर्नी में होते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक बार मैं एक स्कूल में गई थी सेशन के लिए कोर्स के लिए, तो मैंने उनसे ये सेम क्वेश्चन पूछा कि आपने कितनी बार एनसीईआरटी रीड करी है. मैंने बोला एक बार पढ़ने से नहीं होता है कुछ. यू नीड टू रीड एनसीईआरटी लाइक 5 to 6 times, इट्स मिनिमम. तो 5 to 6 टाइम्स पढ़ने के बाद अगर आप ये नहीं बता सकते कि वो क्वेश्चन पर्टिकुलर किस पैराग्राफ किस चैप्टर से आया, आई थिंक फिर वो रीडिंग बेकार है. तो इस वजह से ऑलरेडी एक आइडिया हो चुका होता है कि चैप्टर क्या है, कौन सा वो सब टॉपिक है. तो जब मैं टॉपिक को दोबारा से रिविजन करने के लिए जाती थी, तो आई यूज्ड टू फर्स्ट रीड दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर लाइन्स. दूसरी चीज़ जो मैं करती थी वो ये था कि मैं कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन उस चीज़ की फिर दोबारा से देख लेती थी, क्योंकि एनसीईआरटीज़ के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि पहली चीज़ वो बहुत डिस्टॉर्टेड है चैप्टर्स में, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उनको पढ़ तो सकते हैं बट कंसेप्शन क्लैरिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको वीडियोज़ देखने की ज़रूरत होती है, जो प्लेटफॉर्म्स है वो नॉर्मली प्रोवाइड करा ही रहा है. तो मुझे लगता है वो वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट
मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन चैप्टर्स, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. तो एक बार पढ़ लिया उससे पहले दैट इज ऑल्सो इमरजेंट ने बोला कि दैट गाइडेड मुझे वो स्मार्ट वर्क है. वो हार्ड वर्क वो होता है कि यू गो थ्रू एवरीथिंग एंड दैट इज स्मार्ट वर्क वेयर यू पॉइंट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दैट नॉलेज कि दिस इज वीक एंड देन पॉइंट टू दैट पार्ट कि हाँ भाई ये वाला चीज़ मेरे को रिवाइज करनी है. आई थिंक अगर वो वाला पोर्शन अगर कोई आपको बहुत ढंग से पता चल जाए कि हाँ मेरे को इशू कहाँ पर तो इट वुड हेल्प. ओके सो दैट्स नाइस. सो समराइजिंग इट यूड से कि गिव मॉक्स. अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा आपको लग रहा है कि हाँ भाई रिविजन नहीं हुआ तब भी गिव मॉक्स. आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शंस और स्ट्रॉन्ग सेक्शंस and practice accordingly, learn accordingly, and then again go for mocks, repeat the process, right? Very nice. Just adding to it, तो जब आप कर रहे थे तो CUET में I guess इतना कुछ available नहीं था. Right now, I guess we have an abundance of mocks. Every subject में अगर लगते हैं 15-20 mock हमारे पास में and more than 12 subjects we cover. All these mocks are specially crafted by experts, by a team of experts, जहाँ पे हम एक एक चीज़ को we have analyzed all the previous year papers और फिर and that's not just कीपर ही देख लिया. these are like very data structurally हम उसको analyze करते हैं इन चीज़ों को and then we create questions जो हमारे experts create करते हैं based on that even trying to find out what could be the trend next year, how much is like the level is going to grow. So uske basis pe we create questions. So all of these questions you won't want to find these questions anywhere else. It's not easily available. जो हमारे एग्जाम में होता है कि सीधा YouTube पे सर्च करने से या फिर उससे नहीं आएगा या फिर Google पे डालने से नहीं आएगा. So these questions are specifically made here only. Okay, all of these questions are. And I think there is bioanalytics also. And there is like very ultra high level of analytics उसके साथ. When you give those mocks you won't know कि how much the system know about your book. जैसे कि there are some points जहाँ पे you get कि every topic, right? Even the questions were not like कि इस topic से question इस तरीके से आपको नहीं पता चल रहा होगा because you're giving a mock exactly. But and then you will get to know for each concept how much time you have spent. वहाँ पे पता चल जाएगा आपको. Even this will give you a lot of other scenarios. You will leaderboard head at this updated real time. जहाँ पे आप अभी टेस्ट दे रहे हो कल को टेस्ट दे रहे हो, you know the competition. How much is this competition? Never get demotivated कि मेरे को इतने मार्क्स आए. You know कि this much I have got, but this is high enough for a lot of people. And because this is a competitive exam, that's the difference between boards and boards में 99% लाने चाहिए तुम्हारे लिए इसके लिए, पर आप तो लाने हैं, ठीक है. पर competitive exams work differently कि आपके अगर इतने परसेंट आए हैं, it's based on how many people are scoring lower than you. तो वहाँ से वो गाइड होता है. Even what you were talking about, these are the mocks. So yeah, you give mocks, you get to understand. They are also coming up with some diagnostic tests which I was talking to you about. कि जहाँ if you go through that is an adaptive test. मतलब आप जैसा perform करो उससे आपके number of questions grow or it becomes less. How well do you perform? Or even if you're performing very bad, that questions will be less. मतलब it's like कि it adapts to the how the student is performing and it gets you बिल्कुल topic level analysis. Which topic is weak? It will point out at the end. You'll get a report. This topic is weak. This topic is strong. Go revise them. Kind of like that. It's saving so much time. It's saving so much time and it is analysis में बहुत time चला जाता है. Exactly. If it is like inverse system, then it's I will show you a platform also. You want some review there. ठीक है. तो I thought कि I guess this is a good revision strategy one should follow. कई लोग ये भी करते हैं notes वगैरह बनाते हैं. हाँ, starting से बनाया है. अच्छा, so how good your notes look like? कई लोग लगता है कि notes ऐसे दिखने चाहिए. But what are the like common myths around notes? कैसे होने चाहिए notes? I think common myth पहला ये है कि notes वो short होने चाहिए, बहुत जल्दी रिवाइज करते हैं. ठीक है, होनी चाहिए. But मुझे लगता है वो subject पे depend करता है. अच्छा. जैसे मैंने कहा NCERT थोड़ा distorted है. कुछ चीज़ कहीं है और उसका link नहीं बनता आराम से. तो मैं नोट्स को उस फॉर्म में बनाती थी कि मैं अगर बुक नहीं पढ़ रही और मैं सिर्फ अपने नोट्स पढ़ रही हूँ तो मैं रिलाई कर सकती हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है. तो इस फॉर्मेट में मेरी नोट्स. Even when you were watching lectures, you were making notes from them? Yes, to some extent, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना NCERTs में जो कि बहुत इलेबोरेट करके नहीं
दिए सुबह। अब फॉर एग्जाम्पल वो टॉपिक ही 2 मार्कर टाइप है, कंटेंट 2 मार्कर है, बट मोस्टली आवाज में आंसर है, फिर आप क्या लिखोगे उस पर? हम सेम को तो एग्जैजरेट नहीं कर सकते। तो what do you think is the correct time to start giving mocks? Can you give me some months, like number of months? For the CUET First 3 weeks. Okay, so as I said, I took a 2 day off. उसके बाद हाँ, अब 1 वीक मैंने दिया था उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में जो डिलीटेड, और उसके बाद आई डिवोटेड लाइक और द होल ऑफ दैट मंथ टू दी मॉक्स only, क्योंकि मुझे लगता है मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ मॉक्स की भी एग्ज़ाम का एकदम फील, इट्स लाइक कि ऐसे बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि दे नो एवरीथिंग, दे लर्न एवरीथिंग। जो आप भी मॉक्स दे रहे हैं तो क्या वो उसका जो फील और पैटर्न वो एग्जैक्टली CUET के जैसा था? नहीं, वो ऐसा नहीं था। Just bunch of questions that you have to like. You were doing it online, but it was not exactly like. It was not exactly. Okay, so for with our mocks, that the case is कि आप जब हमारे mocks, if you attend our mocks, you'll see that is complete. You will not say exact replica of it. It's the closest, nearest exam experience you can have of the actual CUET exam. जो भी and I think जो आप कह रहे थे exam preparation को लेकर. So there are 4 options, say review और ये सब सारे होते हैं ना, and I have उसको वो actually आपको strategize करने में help करते हैं कि like the question you are thinking कि ये होगा नहीं होगा, so you can mark this for review and move ahead in next question पे जाना, because offline experience में you see all the questions, online experience में you see only one question at one time, then you have to toggle through all these questions, and that could be like if you go with one strategy, offline वाली strategy से जाओगे आप, तो you might not be able to see most of the questions you were able to do if you had time. So in our platform, this is very much, I find it really interesting and very informative, मतलब बहुत helpful है बच्चों के लिए, because it's exactly like that. So you can strategize better. You are like having the real exam 20 times and then like going for the actual real exam. And also if you haven't heard about it, I would take this opportunity. So we are providing right now कि जो भी बच्चे हमारे साथ किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हैं, either they buy our crash course or the mocks, which are very helpful, and the crash course are very helpful, and they get into the top 6 colleges, which the list is mentioned in our description. So the first semester fee of that college will be on us. So right now I'm going to ask you, and I will give you 2 options for every of these, and you have to give me a priority, right? Which is the priority, which is on top priority in these 2. Okay? And you have to select only one. Again, because you are into political science, doesn't mean you can be diplomatic. Okay. So we call it, what's your top priority? College or course? Course. Good. Boards or CUET? Yeah. Both are important. Boards are important, I know, but you have to choose one right now at that moment. Okay, let's make it easy first. It will be CUET. It's fine. Yeah, okay. LSR or KMC? LSR. LSR or Hindu? LSR. Okay. Hard work or smart work? Smart work. Smart work. With some hard work. Okay. Mocks or PYQs? Mocks. Lajpat Nagar or Sarojini Market? Lajpat Nagar. Taran or Crossroads? Cool. इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. Okay, Taran. Okay. ठीक है, all into Taran. ठीक है. Okay. तो अभी फिलहाल मैं डिबेटिंग में हूँ. So Yashshvika, it was really nice talking to you, but I won't let you go just by like this only. You have to give our students, थोड़ा सा आपको कुछ steps लेना पड़ेगा, something which you really want to say, or anything which has really helped you. So you can share that experience, that tips to our students. So there are a couple of things which I would like to mention as my final tips. First is being consistent for these 2 months, whatever time you have. Be consistent, be true to yourself, you know. एक बार एग्जाम होने के बाद आपको ये फील नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अगर मैंने उस टाइम पे और थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लिया होता तो मैं कहीं और होती, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए. तो इतना हार्ड वर्क तो कर लो एटलीस्ट इन 2 महीने में कि उसके बाद ये रिग्रेट कभी ना रहे लाइफ में कि जो किया था ट्रू टू योरसेल्फ आई थिंक किया था. राइट. एंड सेकेंडली आई थिंक मॉक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त.
उन लोगों के लिए भी जिनके बोर्ड्स अच्छे रहे हैं या अच्छे जा रहे हैं, और उनके लिए भी जिनके बोर्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि एक रियल एग्ज़ाम फील आपको तभी आती है, वो प्रेशर एग्ज़ाम वाला वो उसी टाइम तभी आता है जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं, उसको हैंडल करना। आई थिंक मॉक्स प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप योर स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल। इसको रिजिड में बनाना कि रोज़ 8 घंटे ही पढ़ना है हमें, कीप इट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स यू एंड डोंट फॉलो मी। मतलब मेरी टिप्स सुन के या मेरा रूटीन सुन के फिर कोई बस सोचा कि हमने वही फॉलो करनी है। सो इट्स लाइक बी ओरिजिनल, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी एंड बी फ्लेक्सिबल विद दैट स्ट्रैटेजी एंड नॉट इतना फ्लेक्सिबल कि अब छोड़ ही दिया है पढ़ना। तो इसलिए पहला पॉइंट था कंसिस्टेंसी का, तो कंसिस्टेंसी था। Consistency is very important. Practicing mocks is very important. Then you said time management is important, and you said keep your strategy flexible. I think this is what you're trying to quote was like be a little smart with your strategy. कि आपको लग रहा है जो चीज़ हेल्प कर रही है उसको करो, जितना कर रही है उतना करो, right? And सब्जेक्ट बायस, हाँ, एक सब्जेक्ट बायसनेस ना रखो कि हाँ यही सब्जेक्ट मेरे को बहुत पसंद आ रहा था यही करते जाते हैं, या फिर मुश्किल लग रहा था यही करते जाते हैं। बोर्ड्स आर ओवर, अगर आपने दे दिया एग्जाम, बोर्ड्स आर ओवर। बोर्ड्स की राइट नाउ जो अभी वैल्यू है वो एलिजिबिलिटी के लिए आपको काम करेगी इन कॉलेज। राइट नाउ इट्स टाइम, जो भी हुआ अगर अच्छा हुआ बुरा हुआ, इफ अच्छा हुआ उसको अपने उस पे नहीं लेना है, अगर बुरा हुआ तो भी आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। You just need to qualify, use that exam as qualifying exam. Obviously कुछ पढ़ा होता तो obviously उसमें आपको हेल्प मिलेगा ही in your exam. But now this is the time for CUT. Prepare for it with full force. और yeah, all of the tips. So thank you. Okay, yeah, please go ahead. Always remember कि कोई भी एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा और आपको वो कहाँ लेके जा रहा है। तो take this CUT very seriously because this will decide where the coming 4 years you will be spending, right? So make sure that you spend it in a good college. Make sure that you're studying in a good college and we are trying to help you for that in every way possible. You can come to ExamFactor.com, you know much about it. Or यहाँ से भी description में there are a lot of things you can go through. So I think, Yashshvika, that was really nice talking to you, and I know that a lot of students are going to benefit from this and doing a very good work. Thank you very much.